We've got the best deals on delicious food. Order now. या दोस्तों आपको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया अपनी 5 विकेट लूज कर चुका है। Takes the single. He chased it in, tossed it up nice and slow.
आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5 विकेटें लूज कर दी हैं। सी ग्रीन अपने स्ट्राइक रेट पे जमे हुए हैं 6 स्कोर के साथ। मैक्सवेल भी अपने स्ट्राइक रेट पे जमे हुए हैं 13 रन के साथ। 34 ओवर और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। अश्विन करवा रहे हैं बॉलिंग। पंद्रह ओवर का खेल होना बाकी है। गेंदों से आपको बताते चले 15 ओवर और 1 गेंद का खेल होना बाकी है। अश्विन दौड़ गया है, पर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा गेंद। आउट होने से बच गए हैं। मैक्सवेल आउट होने से बच गए हैं। गेंदों से आपको बताते चलेंगे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5 विकेट उतर दिए हैं। स्कोर जो है, स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 138 है 5 विकेटों के नुकसान पर। 35 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। दोस्तों आपको बताते चले कि इंडिया की जानिब से कुलदीप आए हैं बॉलिंग करने के लिए, या कुलदीप यादव आए हैं बॉलिंग करने के लिए इंडिया की जानिब से। सामना करेंगे मैक्सवेल। दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद। बाउंड्री लगाने की कोशिश की गई लेकिन फील्डर मौजूद। 1 रन को पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद। रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद। ऑफ साइड की तरफ लगाया शॉट और 1 रन को दोनों ही बल्लेबाजों ने जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया है। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद। अपील की गई लेकिन नॉट आउट कहा गया है एम्पायर की जानिब से। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी शॉट। विकेट गवा बैठे हैं मैक्सवेल अपनी।
या दोस्तों आपको बताते चलें कि गेंद बाहर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अचानक अंदर की तरफ आई। शॉट लगाने के लिए आगे बढ़े मैक्सवेल, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे हैं। या दोस्तों आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया अपनी 6 विकेट लूज कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया अपनी 6 विकेट लूज कर चुका है। लाइव स्कोर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। India is bowling first. Australia has scored 140 for 6 in 35.5 overs. ARYZ live match। जी हाँ दोस्तों आपको बताते चले कि अश्विन आए हैं इंडिया की तरफ से बॉलिंग करवाने के लिए। अश्विन आए हैं इंडिया की जानिब से बॉलिंग करवाने के लिए। सामना करेंगे सी ग्रीन। अश्विन दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी बॉल, कैच दे दिया है सी ग्रीन ने। शॉट लगाने के लिए गेंद को उठाया, लेकिन फील्डर मौजूद, कैच दे दिया है। इसी तरह आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया अपनी 7 विकेटें लूज कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया अपनी 7 विकेटें लूज कर चुका है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतना चाहता है तो विकेट नहीं गिरानी होगी। आपको बताते चलें कि 37 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 है 7 विकेटों के नुकसान पर।
या दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले मैचेस की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेटें लूज कर दी हैं। जहाँ दोस्तों 37 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। 13 ओवर का खेल होना बाकी है। आप देखते हैं 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रन बना सकती है। स्कोर बहुत कम है टीम ऑस्ट्रेलिया का अगर देखे जाए तो। इंडिया के जीतने के चांसेस और बढ़ गए हैं। कुलदीप आए हैं इंडिया की जानिब से। या दोस्तों आपको बताते चलें कुलदीप आई हैं इंडिया की जानिब से बॉलिंग करने के लिए। कुलदीप दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किए गए। रन लेने का कोई मौका नहीं। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, अपील की गई है इंडिया की जानिब से, अपील की गई है लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। रिव्यू नहीं लिया गया इंडिया की जानिब से। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया गया है। कुलदीप यादव एक बार फिर दौड़ जो आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव एक बार फिर दौड़ जो आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों के तरफ से।
फिर दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद स्ट्रेट पे लगाया है, चौका लगाने की कोशिश की गई लेकिन फील्डर मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन को पूरा कर लिया है। अगर टॉस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। 39 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए अगर तो ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 141 है 7 विकेटों के नुकसान पर। क्या दोस्तों आपको बताते चले अश्विन आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। इंडिया की जानिब से अश्विन आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। अश्विन दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल ऑफ साइड की तरफ धकेला है इस बॉल को और एक रन को पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अश्विन एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं है। या दोस्तों अश्विन एक बार फिर दौड़ के आए, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ साइड की जानिब इस बल्लेबाज ने पुश किया इस गेंद को और एक रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों को। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर अश्विन एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद लेग साइड की जानिब पुश करके रन को पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। जब दोस्तों आपको बताते चलें कि 39 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 145 है 60 विकेटों के नुकसान पर। 7 विकेटें लूज कर दी हैं टीम ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मैचेस में आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाएगी आपको हमारी। अगर आप दोस्तों को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कुलदीप आए हैं इंडिया की जानिब से बॉलिंग करने के लिए। क्या दोस्तों इंडिया की जानिब से कुलदीप आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आखिरी ओवर है इनका। कुलदीप दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। कुलदीप एक बार फिर से दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद स्ट्रेट की तरफ पुश किया है इसे फील्डर मौजूद, एक रन को दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है।
कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद उठा दिया है हवा में गेंद को, गेंद थोड़ी देर हवा में रहने के बावजूद बाउंड्री के बाहर चले गई है गेंद 6 रन के लिए। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा जोर लगाया है लेफ्ट साइड की जानिब। बहुत देर बाद हमें ये शॉट देखने को मिला है उम्मीद के बल्ले से। कुलदीप दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। कुलदीप एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का एक बार फिर से मौका नहीं मिला। कुलदीप एक बार फिर से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा शॉट, एज निकला है पीछे की जानिब, चौका हो गया है जाके। या दोस्तों पीछे की तरफ से एज निकल के चौका हो गया है पीछे की तरफ। ओवर की बात की जाए तो 40 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर ऑस्ट्रेलिया का बहुत कम है, 156 स्कोर है, 7 विकेटों के नुकसान पर टीम ऑस्ट्रेलिया का। लास्ट 10 ओवर्स का खेल होना बाकी है अब। बुमराह आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, टीम इंडिया की जानिब से बुमराह आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। बुमराह दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद, 1 रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। बुमराह एक बार फिर से दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। बुमराह ने दौड़ना शुरू किया, बुमराह दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज को रन लेने का कोई मौका नहीं दिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग सेट की हुई है माशाल्लाह से इंडिया के कैप्टन ने। बुमराह ने दौड़ना शुरू किया, बुमराह दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं।
एज हुआ टप्पा खाती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में गई है। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, फील्डर के हाथों में कैच दे दिया, लेकिन फील्डर ने छोड़ दिया है कैच को। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन को पूरा कर लिया है। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी शॉट लगाने की कोशिश की है, लेकिन फील्डर मौजूद, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया है। या दोस्तों अगर ओवर्स की बात करें तो 41 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। अगर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 160 है 7 विकेटों के नुकसान पर। या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट लूज कर दी हैं, 7 विकेट लूज हो चुकी हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस स्ट्रीमिंग लाइव मैचेस की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच सके। आप लाइव मैचेस की स्ट्रीमिंग चैनल पे देख सकेंगे। जडेजा आए हैं टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जडेजा आए हैं टीम इंडिया की जानिब से बॉलिंग करवाने के लिए। जडेजा दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद गई है सीधा कीपर के दस्तानों में। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया है, रन लेने का कोई मौका नहीं लिया है। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, लेग साइड की तरफ उठ के इस गेंद को रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बच गए हैं एज निकलने से, बच गए हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गोल, पुश कर दिया है पीछे की जानिब, चौका हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कॉमिंस ने पीछे की तरफ चौका उठा दिया है। यहाँ दोस्तों अगर ओवर्स की बात की जाए तो 42 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 164 है 7 विकेटों के नुकसान पर। आज काफी स्लो बैटिंग देखने को मिली है हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से।
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लाइव स्ट्रीमिंग आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे नए आने वाले मैचेस की। जी हाँ, बुमराह आए हैं दोस्तों, बुमराह आए हैं इंडिया की जानिब से बॉलिंग करवाने के लिए। सामना करेंगे हम स्ट्रेरी। बुमराह दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ साइड की तरफ गेंद को धकेल कर 1 रन को पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद थोड़ी देर हवा में रही और चला गई है फील्डर के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि गेंद थोड़ी देर हवा में रही और फील्डर के हाथों में गई है ये गेंद। श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक और विकेट को लूज कर दिया है। या दोस्तों आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक और विकेट को लूज कर दिया है। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 165 है 8 विकेटों के नुकसान पर। आज काफी स्लो बैटिंग की जा रही है टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। या दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस को लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे आप मेरे इस चैनल पे नए आने वाले मैचेस की। टेक्नोलॉजी से बने डॉलर्स एलईडी टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आप एक्सपीरियंस द वर्ल्ड क्योंकि डॉलर्स रिलायबल। जंपा आए हैं। जी दोस्तों आपको बताते चले जंपा आए हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए। जंपा आए हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए।
यहाँ बुमराह अपने ओवर की लास्ट बॉल करवाने के लिए दौड़े, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल ऑफ साइड की तरफ पुल किया है इस गेंद को और 1 रन को पूरा कर लिया गया है दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। जी हाँ दोस्तों, 44 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बहुत कम है, 166 स्कोर है टीम ऑस्ट्रेलिया का 8 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नए मैचेस की स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे नए आने वाले मैचेस की स्ट्रीमिंग लाइव देख सकेंगे। जडेजा आए हैं टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जानिब से जडेजा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जडेजा दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। जडेजा एक बार फिर से दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, एज निकलवाया है जडेजा ने और स्लिप पर कैच दिया लेकिन कैच नहीं हो सका। या दोस्तों, कैच नहीं कर पाए, कैच छोड़ दिया गया है टीम इंडिया की तरफ से। जडेजा एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। 44 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बहुत कम है टीम ऑस्ट्रेलिया का, 166 स्कोर है टीम ऑस्ट्रेलिया का 8 विकेटों के नुकसान पर। या दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नए मैचेस की स्ट्रीमिंग आप लाइव देख सकें। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे लाइव मैच स्ट्रीमिंग देख सकेंगे नए आने वाले मैचेस में। हमेशा साथ निभाएं। बुमराह आए हैं, जी हाँ दोस्तों, बुमराह आए हैं अपना 9वां ओवर करवाने के लिए। इंडिया की जानिब से 9वां ओवर करवाने के लिए आए हैं बुमराह। सामना करेंगे स्ट्राइक। बुमराह दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए आए, बुमराह ने दौड़ना शुरू किया। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन ले लिया गया है इस बॉल के ऊपर।
बुमराह ने एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, बुमराह दौड़ता हुआ है, बहुत अच्छा बॉल पीछे की जानी पूछ गया, फील्डर मौजूद, एक रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों की जानिब से। बुमराह ने दौड़ना शुरू कर दिया है, बुमराह दौड़ते हुए आया, अंपायर क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, स्ट्रेट की जानिब से बाउंड्री लगाने की कोशिश की गई, लेकिन फील्डर मौजूद, दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से रन निकाला है, एक रन मिल गया है दोनों ही बल्लेबाजों को। बुमराह एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, वाइड का इशारा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वाइड का इशारा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वाइड का इशारा कर दिया गया है अंपायर की तरफ से। बुमराह को फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलर्स एलईडी टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आप एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल। जी हाँ दोस्तों, 45 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बहुत कम बना सकी है ये टीम ऑस्ट्रेलिया की। 172 रन बनाए हैं अभी तक, 8 विकेटें लूज करके 172 रन बनाए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले मैचेस की स्ट्रीमिंग आप लाइव देख सकें। या दोस्तों, अश्विन अपना लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं। या दोस्तों, इंडिया की जानिब से अश्विन आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए, सामना करेंगे स्ट्रेरिक। दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल लेग साइड की जानिब कोई किया, फील्डर मौजूद, फील्डर ने जितनी देर में बॉलर को गेंद पास की उतनी देर में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन को पूरा कर लिया है। अश्विन एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी बॉल लेग साइड की जानिब पुश किया है गेंद को, और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन को पूरा कर लिया है। अश्विन
अश्विन एक बार फिर दौड़ दिया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। अश्विन एक बार फिर दौड़ दिया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन निकालना चाहते थे लेकिन रन लेने का मौका नहीं मिला। स्कोर प्रोजेक्टर जो आ रहा है टीम ऑस्ट्रेलिया का वो 200 का आ रहा है। अश्विन एक बार फिर दौड़ दिया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, ऑफ साइड की जानिब पुश किया गेंद को और एक रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। अश्विन अपनी लास्ट बॉल करवाने के लिए आए, सामना करेंगे जाम्पा, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। 46 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बहुत कम बना सकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, 175 रन बनाए अभी तक, 8 विकेटों को लूज किया है। दोस्तों अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लाइव मैचेस की स्ट्रीमिंग आप लोग देख सकें, यानी कि नए आने वाले मैचेस में आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जी हाँ, बुमराह अपना लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जानिब से बुमराह अपना लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं, सामना करेंगे स्टेरिक। बुमराह दौड़ दिया गया है, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया है। बुमराह एक बार फिर दौड़ दिया गया है, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, उठा दिया है हवा में स्टेरिक ने इस गेंद को, ऑफ साइड की जानिब स्टेरिक ने इसे हवा में उठा दिया है और गेंद कुछ देर हवा में रहने के बावजूद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेरिक ने हवा में उठा दिया है गेंद को 6 रन के लिए। एक बार फिर बुमराह दौड़ के गया है, अंपायर को क्रॉस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। बुमराह एक बार फिर दौड़ दिया गया है, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं, गेंद गया सीधा कीपर के दस्तानों में। यॉर्कर करवाए जा रहे हैं बुमराह की जानिब से। बुमराह ने दौड़ना शुरू किया, बुमराह दौड़ के गया है, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल, लेग साइड की जानिब पुश किया और रन लेने का कोई मौका नहीं, फील्डर मजबूत।
बुमराह की लास्ट ओवर की लास्ट बॉल, बुमराह में लास्ट ओवर की लास्ट बॉल करवाने दौड़ते हुए आए, बुमराह दौड़ते हुए आया, बाहर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, वाइड का इशारा दे दिया गया है अंपायर की जानिब से। जी हाँ दोस्तों, वाइड का इशारा दे दिया गया है अंपायर की जानिब से। बुमराह अपने ओवर की लास्ट ओवर की लास्ट बॉल करवाने के लिए भागे, दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, पीछे की जानिब पुश किया, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन को पूरा कर लिया गया है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, 47 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर की बात की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना स्कोर नहीं बना पाई और 47 ओवर में 183 स्कोर बन सका है अभी तक, 8 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर की बात की जाए तो इंडिया की जानिब से सिराज आए हैं अपना छठा ओवर करवाने के लिए। या दोस्तों, सिराज आए हैं अपना छठा ओवर करवाने के लिए, सामना करेंगे स्टेरिक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए मैचेस के आने वाले स्ट्रीमिंग को आप लाइव देख सकें। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइव देख सकेंगे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे आप लोग। 47 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। एक 183 स्कोर है 8 विकेटों के नुकसान पर। सिराज आए हैं अपना छोटा ओवर कराने के लिए, दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, बाउंड्री लगाने की कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया है। जो अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर प्रोजेक्ट आ रहा है वो तकरीबन 205 का आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 205 का स्कोर प्रोजेक्ट आ रहा है। सिराज अकबर फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है। एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। सिराज एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं।
सिराज एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, लेग साइड की तरफ से बैक साइड पे मारने की कोशिश की गई जैम्पा की तरफ से, लेकिन बाउंड्री की कोशिश की गई लेकिन बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे। एक स्कोर को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। फील्डिंग चेंज की जा रही है इंडिया की तरफ से। सिराज ने दौड़ना शुरू कर दिया, सिराज दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, जाने दिया बल्लेबाज ने इस बॉल को, वाइड का इशारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अंपायर की तरफ से एक बार फिर वाइड का इशारा दे दिया गया है। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा दे दिया गया है। सिराज एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल स्ट्रेट की तरफ उठाया है, फील्डर मौजूद, एक रन को पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिराज अपनी लास्ट बॉल करवाने के लिए दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद करवाई गई है, यॉर्कर करवाया है, यॉर्कर। या दोस्तों 48 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। रन की बात करें तो रन इतने ज्यादा नहीं बना पाई आज की ये टीम, 188 रन हैं 48 ओवर्स में, 2 ओवर्स का खेल होना बाकी है इस मैच में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। हार्दिक आए हैं, जी हाँ दोस्तों, हार्दिक आए हैं, हार्दिक पांड्या आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जानिब से बॉलिंग करवाने के लिए हार्दिक पांड्या आए हैं। हार्दिक एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, ऑफ साइड की जानी पूछ करके इस गेंद को, एक रन को पूरा कर लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों के तरफ से।
हार्दिक ने दौड़ना शुरू किया। हार्दिक एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल दिया दोस्तों। जंपा अपनी विकेट गवा बैठे हैं। आपको बताते चले जंपा अपनी विकेट गवा बैठे हैं। बहुत ही अच्छी बॉल, जंपा अपनी विकेट गवा बैठे हैं। Start 173 dot balls in the innings. हार्दिक एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का मौका मिल गया है दोनों ही बल्लेबाजों को। हार्दिक एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। हार्दिक एक बार फिर दौड़ते हुए आए, सामना करने का स्टैरिक, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, चौका लगा दिया गया है स्टैरिक की तरफ से, ऑफ साइड की जानिब पुश किया, हल्का सा पुश किया गेंद को, गेंद एक टप्पा करती हुई बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की है, गेंद चौका लगा दिया है स्टैरिक ने इस गेंद पे। हार्दिक एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन ले लिया गया है इस गेंद के ऊपर। जी हाँ, स्टैरिक की तरफ से रन ले लिया गया है। कुछ लम्हे सिखाते हैं सच्ची खरे की पहचान। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रही है सिर्फ और हेल्दी का यकीन। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ओवर रह गया है, 9 विकेटें गिर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर स्कोर से वाले से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई, 195 स्कोर है 9 विकेटों के नुकसान पर, एक ओवर का खेल होना बाकी है। सिराज आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जानिब से सिराज आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए, सामना करेंगे स्टैरिक।
जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले सिराज आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाले न्यू मैचेस की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। सिराज दौड़ते हुए आया, बार को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। सिराज एक बार फिर दौड़ते हुए आया, बार को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, स्ट्रेट पे लगाया है, स्ट्रेट पे बाउंड्री लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट पे बाउंड्री लगा दी गई है शारी की तरफ से। शारिक अपनी फॉर्म में लग रहे हैं। जिस काम के लिए इनकी टीम ने इन्हें भेजा है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाउंड्री लगा दी है स्टैरिक ने। स्टैरिक के बल्ले से चौका दिखाई दे रहा है हमें। सिराज एक बार फिर दौड़ते हुए आए, बार को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, हवा में उठा दिया है इस गेंद को। स्टैरिक ने हवा में उठा दिया है इस गेंद को। बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और ये स्टैरिक अपनी विकेट गवा बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टैरिक ने अपनी विकेट गिरा दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 के स्कोर पे आउट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टैरिक ने बाउंड्री लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फील्डर मौजूद, कैच कर लिया है फील्डर ने। आप सभी दोस्त कहीं मत जाइएगा, आपको अभी दिखाएंगे कि कौन सा प्लेयर कितने रन बना सका और उस कार्ड के बारे में बताएंगे। आज की इनिंग्स इंडिया के साथ ही इंडिया ने बहुत ही प्रैक्टिस की है। इसका मतलब है इंडिया ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है आज के इस मैच में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मैच में इंडिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। एक 199 में सारे आउट कर दिए हैं। हाँ जी जी बिल्कुल दोस्तों, 199 स्कोर पे ऑल टीम आउट हो गई है ऑस्ट्रेलिया की। या दोस्तों, आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, हम आपको अभी बताते हैं कि किस बॉलर को कितने रन लगे हैं। या दोस्तों, इंडिया के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो गए। इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, 89% हो गए हैं इंडिया के जीतने के चांसेस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के जीतने के चांसेस 89% हो गए हैं। या दोस्तों, हम अभी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डी वार्नर के बारे में। डी वार्नर ने 52 गेंदों का किया सामना और 41 रन बनाए।
जी हाँ दोस्तों, 50 डी वार्नर ने 52 गेंदों का किया सामना, 41 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 78 के स्ट्राइक रेट से आज खेले। एम मार्श के आज बल्ला नहीं चल सका, ये 6 गेंदों पे 0 स्कोर बनाकर आउट हुए। अगर बात करते हैं स्मिथ की, स्मिथ ने 71 गेंदों का किया सामना, 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए। इन्होंने 64 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। मोहम्मद लाबुशेंज ने आज 41 रन बनाए और 27 गेंदों का किया सामना, 41 गेंदों का किया सामना और 27 रन बनाए हैं। एक चौका लगाया, 65 का स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। जी मैक्सवेल ने आज 25 गेंदों का किया सामना, 15 रन बनाए, 60 के स्ट्राइक रेट से ये भी आज खेले हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं जी मैक्सवेल आज। एक कैरी जो के विकेट कीपर हैं, इन्होंने 2 गेंदों का किया सामना और 0 रन बनाकर आउट हुए। आगे बात की जाए सी ग्रीन की, सी ग्रीन ने 20 गेंदों का किया सामना, 8 रन बनाए, 20 गेंदों का किया सामना, 8 रन बनाए और 40 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। आगे बात की जाए पी कुमार की, पी कुमार ने 24 गेंदों का किया सामना, 15 रन बनाए, एक चौका लगाया और एक छक्का लगाया, 62 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। जी हाँ दोस्तों, पी कुमिंस आज हमें 62 के स्ट्राइक रेट से खेलते दिखाई दिए। आगे बात की जाए स्टेरिक की, स्टेरिक ने आज 25 गेंदों का किया सामना, 35 गेंदों का किया सामना, 28 रन बनाए, 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया और 80 के स्ट्राइक रेट से ये आज खेल रहे हैं। आगे हैं जैम्पा, जैम्पा ने 20 गेंदों का किया सामना, 6 रन बनाए, 30 के स्ट्राइक रेट से ये आज खेल पाए हैं। आगे हैं जे हाजवुड, इन्होंने 1 गेंद का किया सामना, 1 रन बनाया, ये 100 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। और इंडिया की बॉलिंग की तरफ से 12 रन भी दिए गए, 6 वाइडें फेंकी गई, 6 लेग बॉल्स फेंकी गई, जिसकी वजह से कुल मिलाकर स्कोर हुआ 199। जी हाँ दोस्तों, 199 स्कोर पर आर टीम आउट हो गई है। एक बार आपको फिर बताते चलें कि इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। इंडिया के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बारे में आपको हम बताते हैं कि डेविड वार्नर ने 52 गेंदों का किया सामना, 41 रन बनाए, 78 का स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। आगे बात की जाए नंबर 2 पे, तो एम मार्श में आज 6 गेंदों पे 0 रन बनाकर आउट हुए, 0 का स्ट्राइक रेट से। नंबर 3 पे बात की जाए तो एस स्मिथ हमें आज नजर आए, 71 गेंदों का किया सामना, 46 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 64 के स्ट्राइक रेट से आज हमें खेलते हुए दिखाई दिए। आगे हैं लाबुशेंज ने 41 गेंदों का किया सामना, 27 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 65 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। आगे बात की जाए जी मैक्सवेल की, तो 25 गेंदों का किया सामना, 15 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 60 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। आगे बात की जाए कैरी की, जो कि विकेट कीपर है टीम ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 2 गेंदों का किया सामना, 0 रन पे आउट हुए हैं। आगे है ग्रीन की बात की जाए तो 20 गेंदों का किया सामना, 8 रन बनाए, ना ही कोई छक्का लगा सके ना ही कोई चौका, 40 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। आगे है पी कुमिंस, पी कुमिंस की अगर बात की जाए जो कि कैप्टन है टीम ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने 24 गेंदों का किया सामना, 15 रन बनाए हैं, 1 छक्का लगाया है और 1 चौका जड़ दिया है, 62 के स्ट्राइक रेट से आज हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। आगे अगर बात की जाए तो मोहम्मद स्टेरिक ने आज 35 गेंदों का किया सामना और 28 रन बनाए हैं, 2 चौके लगाए हैं और 1 छक्का लगाए दिखाई दिए हैं हमें। इन्होंने 80 का स्ट्राइक रेट आज 80 के स्ट्राइक रेट से ये खेले हैं आज। अगर आगे बात की जाए तो जैम्पा की, जैम्पा ने आज 20 गेंदों का किया सामना, 6 रन बनाए हैं और 30 के स्ट्राइक रेट से आज हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर बात की जाए तो जे हैजवुड जो कि नॉट आउट हमें दिखाई दिए हैं, इन्होंने 1 गेंद पे 1 रन बनाया और 100 के स्ट्राइक रेट से आज हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। भारत की टीम से 12 रन एक्स्ट्रा दिए गए, 6 वाइड बॉल्स फेंकी गई, 6 लेग बॉल फेंकी गई, जिसकी वजह से
टोटल कुल स्कोर हो गया है टीम ऑस्ट्रेलिया का 199। 200 का टारगेट है, ज्यादा टारगेट नहीं है। अगर बॉलर की बात की जाए तो जय बुमराह है पहले नंबर पे। जय बुमराह ने अपने 10 ओवर में 35 ओवर 10 ओवर करवाए, 35 रन दिए और 2 विकेटों को किया अपने नाम। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज ने 6.5 ओवर कराए, एक स्कोर इन्होंने ज्यादा दिया, 26 रन इन्होंने टोटल दिए, एक विकेट को किया अपने नाम। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर करवाए, 28 रन दिए, एक विकेट को किया अपने नाम। राहुल अश्विन की बात की जाए तो 10 ओवर करवाए, एक रन इजाफी दिया इन्होंने, 34 रन दिया है इन्होंने और एक विकेट को किया है अपने नाम। आगे बात की जाए के यादव की, के यादव ने 10 ओवर करवाए हैं, 42 रन दिए हैं, 2 विकेटों को किया है अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, आगे दिखाई देते हैं हमें राहुल जडेजा ने 10 ओवर करवाए हैं, 2 रन इन्होंने इजाफी दिए हैं, 28 इन्होंने रन दिए हैं टोटल और 3 विकेटों को किया है अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, 3 विकेटों को किया है अपने नाम। एक बार फिर आपको बताते चले कि इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। जय बुमराह ने जो स्कोर दिए हैं, इंडिया के बॉलरों की बात करें तो जय बुमराह आते हैं। जय बुमराह ने 10 ओवरों में 35 रन दिए और 2 विकेटों को किया अपने नाम। मोहम्मद सिराज ने 6.5 ओवरों में 1 विकेट को किया अपने नाम और 26 रन दिए और 1 रन इजाफी दिया। एच पांड्या ने 3 ओवर करवाए, 28 रन दिए और 1 विकेट को किया अपने नाम। राहुल अश्विन की अगर बात करें तो राहुल अश्विन ने 10 ओवर करवाए, 34 रन इन्होंने टोटल दिए और 1 विकेट को किया है अपने नाम। के यादव ने 10 ओवर करवाए, 42 रन दिए हैं, 2 विकेटों को किया है अपने नाम। और राहुल जडेजा ने 10 ओवरों में 2 रन इजाफी दिए हैं, टोटल 28 रन दिए हैं और 3 विकेटों को किया है अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, ये है आज का इस मैच का कुल स्कोर।
यहाँ दोस्तों आज आपको बताया जाए कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम आज ज़्यादा रन नहीं बना पाई। ऑस्ट्रेलिया का बल्ला आज ज़्यादा देर नहीं चल सका। 199 पे पूरी टीम आउट कर दिया है आज इंडिया की टीम ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले आज टीम आउट कर दी है टीम इंडिया ने टीम ऑस्ट्रेलिया की। बहुत ही अच्छा मैच रहा। आखिरी दम तक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने साथ ना छोड़ा, लेकिन जो खुदा को मंजूर हो वही होता है।
फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज हो, चूज पेपाक। चाय चाहिए कौन सी जना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Triazaya, 2 for 2. Got 100 against Australia at indoor. दोस्तों दूसरी विकेट भी ले ली गई है टीम इंडिया की। On landing through to Rohit Sharma. 2 विकेट ले ली गई हैं टीम इंडिया की। It's amazing how when the pitch starts turning, there's also seam movement for the fast bowlers. This pitch is a great example of that. Just cut back in. If you're an opener, what I can tell you better, that's the last ball you want to be facing first up. The one that pitches and comes back in. It's excellent for Josh Hazlewood. And for the people at home, when the ball seams, that's when the ball moves the latest. And it's the hardest to adjust to. If the ball swings, yes, swinging late, it's challenging. But when the ball seams in, like it has that ball to Rohit Sharma, there's no time to adjust, especially at that speed. So you just hope that it's either going over the top of the stumps or it's going down leg. But that's the skill that Josh Hazlewood has. He'll find something out of the surface if it's got something in it for him. A third one down, 2 in the over for Hazlewood. The absolutely perfect start for Australia. Big trouble. That's not the best of shots there from Shreyas Iyer. He's changed his technique up a bit to deal with the short ball, and it shows because what he's done is just thrown his hand at one on a slow pitch. It's gone straight into the hands of David Warner. Exactly the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips, so crispy, so tender. एक और कप चाय, टपाल दानेदार। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स LED टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। होगा दुनिया में तू बेमिसाल, मेरे बच्चे मेरे नौनिहाल। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान, परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान। फास्ट, तारों से सितारों तक। बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगे। आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। चाय चाहिए कौन सी जना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। Cricket World Cup, Stark. Just bowls a contrasting length to Josh Hazlewood, of course, left-handed, right-handed, but Stark full with a new ball, Hazlewood on a length or short of it. This battle, the two titans, Kohli, Stark, ball moves late and Virat just watches it so closely onto his bat, allows the ball to swing and just takes it to the leg side. It's a skill of Virat Kohli. Even when there's chaos around him, he knows how to zero in and watch that ball and just react to the best of his ability over and over again. That's so good for Mitchell Stark.
That's asking questions, big questions of your technique. Ball just a little bit wide. Kept going away from Shreyas Iyer there. He wasn't able to get a full swing of his bat on that at all. Just a bit of a check, back foot drive. Dave Warner's hands ready to accept it. The Aussies are up and about now. We all are. That looks like a simple lead, but it's actually good batting, because when you're looking for the ball that's coming in, when it's outside the off stump, sometimes you tend to go at it. It's just good that Virat Kohli is getting himself into a position where he knows where his off stump is, and anything just outside that, he's courageous enough to leave it for the moment. The same ball he'd probably play it. He's batting on 40 or 50, but for the moment he's just letting it go. Yeah, it really is a treat to be able to watch someone who's one of the great players just assess the conditions, assess what's going on, react, leaving it, playing when the ball's straight as well. And just when I say that, the next ball, he goes at one that's on the first six stump, and you can understand why he's doing it as a batter. He's looking for the ball that's coming in. LBW ball is all he's trying to protect himself from. When he sees something outside, the instinct is to go at it. The previous ball he left it alone, but this one, maybe gets a touch greedy and just looks to get bad on that. And the natural variation out of Mitch Stark's hand as well. He's trying to swing that ball in. He's not trying to get that to fade across the right-hander. Natural variation is the biggest asset any bowler has. You look back to the way Ishan Kishan went, and obviously that delivery there 2 balls ago, they're induced or seduced by the fullness of length. Ishan just saw the fullness of length, disregarded any swing. That's a good delivery and nip back up from a length. And the width there, ending Shreyas Iyer's stay. You look back at those dismissals and you feel Ishan Kishan, I'd still give him the benefit of doubt, because if that is slashed away to the boundary, we'd be saying, oh, outside off stump, he got room, went for it. But Shreyas Iyer, after 2 wickets falling, to try and play a drive on the arm, on this pitch, isn't the right thought process. You admired Shreyas Iyer's intent to be able to take the bowlers on. Unfortunately, his execution just wasn't how he wanted it to be. And the placement wasn't how he wanted it to be as well. Sometimes they just fall into the gap, but tonight for Shreyas it wasn't the case. See, he's not seduced by the fullness of length. 3 overs gone, 5 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कुछ लम्हे सिखाते हैं सच्चे खरे की पहचान। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रहे हैं हम सेफ और हेल्दी का यकीन। KNNs। फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान, परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान। फास्ट तारों से सितारों तक। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग। चाय Living on that length once again, so metronomic. This matchup for Australia as well, this is the one they've been looking for. Josh Hazlewood, Scott Virat Kohli out 4 times in 7 matches. They've duelled together in one-day cricket. Josh Hazlewood just penetrating that off stump, trying to get that ball to nip in. Just very rare to be able to get Virat Kohli out LB, but it's Josh Hazlewood's going to be trying to do. Beat him on the inside. Virat knowing after seeing Rohit Sharma get out for that ball that seamed in, wasn't expecting the ball to go away a little bit as well. And we've got
Australia have got 2 slips waiting there. What's so hard to play? And this one comes back in, hits his thigh. The next one, similarly pitched ball. And you're looking at it as a batter and going, okay, it's coming in, and this one leaves you. And tell me, Wardo, you've been a fast bowler and Bishop. You don't know, isn't it? When it pitches and does what it does, you're never sure. You just try and hit the length, and then you're hoping the natural variation comes into play. We talked about the differences as well, and what makes Josh Hazlewood so difficult when he's in good rhythm. Stark will look to pitch it up and get it swinging. He's got that ability. And Hazlewood just lives in that good length in that first power play. So it's hard to get to him too often. He doesn't often give you much width. जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तो The natural लाजवाब variation लेफ्ट for any और bowler is ऑस्ट्रेलिया always की such a बॉलिंग weapon. And Josh Hazlewood, the one thing he always has done from the first time I ever really met him or played with him was the incredible control he has over the ball, leaving his hand. There is natural variation, but he's got great control of whether the ball seams in at times with wrist angle, with seam angle that he has in his grip. He's just got incredible control over exactly what the ball does, which is a very rare talent. And he's such a simple guy as well. Doesn't complicate things. I remember there was an IPL game where he got hammered in the match. It was Johnny Bairstow who took him apart in CCI. And then I was just speaking to him in the evening, and he was just behaving like nothing had happened. I was thinking, okay, so probably this is the end of the tournament for him. He's going to get smacked up. This is the next game he comes. He bowls a brilliant spell. So after that I go, I'm like, weren't you worried? Weren't you upset that Johnny Bairstow really went after you and took you down? And he just said, no. I mean, it was just one bad day for me. So I said, did you do any analysis? Did you work on it? No. He just said that it just didn't feel right coming out of his hand. Oh, that's a lovely shot here from KL Rahul. You know how good he is, how talented he is. Slightly pulled it away. First boundary. 4 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा KL राहुल ने चौका लगा दिया है. 10 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो. आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स. कैडबरी डेयरी मिल्क. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. एक कप और है कितनों का बहाना. एक कप और तुम है एक और कप चाय. मैं एक और कप चाय. टपाल दानेदार. कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड. अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें. चूज होप, चूज पेपाक. लापरवाही किसी से भी हो सकती है, इसीलिए अपने किसानों की हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ खाली प्लान. स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए. एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग. On the other hand, Virat Kohli is telling himself, I'm going to put this man away, because that's how he thinks. जी हाँ दोस्तों, स्टेरिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए. Virat Kohli is, if there's a tough battle, if he knows that there's a good bowler on the other side, he doesn't look to survive them. He looks to take them on. There's a game against Sunrisers, and there's a much shortened game, and the bowler in great form was Dale Steyn, and his only thought process was, I need to take him down. And that tells you about the man, which fascinates me. It's understanding what you are, what the best version of you. The majority of the time it is taking the game on, being aggressive, let your natural instincts take over. And that's where all the hard work to be able to really embed that muscle memory of your skill, picking up the ball and reacting. And when you have that mindset to have the aggressive intent to be all over a loose ball, that's when 4 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा. Virat Kohli knows how to स्कोर tap की into बात that. की जाए तो स्कोर 10 है, 3 India विकेटों के नुकसान पे. 107 points, fantasy game. He was so dominant. So dominant. Kuldeep Yadav as well. Wickets and dot balls, the perfect short format bowler.
स्टेरी के बाद फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल, लेकिन अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा कर दिया है। या दोस्तों, अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा दिया है। Doesn't have quite the Glenn McGrath put the hat across your face and bite into it. He slapped himself a couple of times on the thigh for missing his length. You can see now, just even within this over, the ball's not swinging as much. स्टेरी का एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं। Swing, ball's coming off the middle of his bat a little bit more. This is when Virat will really sense this is my time where I can just put a bit more pressure on Mitchell Starc, knowing the ball's not swinging as much as it has when he first came in. स्टेरी का एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। Through the line of the ball on this surface at times. Sometimes it goes through the top. Jadeja exploited it well. As the innings went on, he started to get the ball to grip and to hold up more. Oh, he's a master in these conditions. There's a bit of turn and it's even slow. And he's one of the hardest bowlers to play because he uses the natural variation which Watto was speaking about, and the fact that he's so accurate makes it really hard for a right-hander. And the fact that his straight pot is the icing on the cake for him. स्टेरिक दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, स्ट्रेट की तरफ छोड़ जाने की उम्मीद से उठाया, लेकिन फील्डर मौजूद, फील्डर ने जितनी देर में विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद दी, उतनी देर में दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा कर लिया है। That's one area of his cricket that you'd want for it to come good in this World Cup, because if he comes good with the bat, the man knows how to win a tournament. The ICC Champions Trophy, he kept contributing immensely as a batter, and we went on to win that tournament. Any tournament that Jadeja has an impact, that tournament is going to be good for the team he is in. That's the kind of personality he is. And he bats at a very critical number. Number 7. Won the IPL final not long ago. स्टेरिक के बाद फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाले डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब मैचेस में चूज हो चूज पे लाइव स्ट्रीमिंग देख डॉल्फिन टेक्नोलॉजी से बने डॉल्फिन एलईडी टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉल्फिन रिलायबल है। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। What are you thinking, Watto? If you were batting right now, are you looking at that score and saying, wow, there's 200, or are you just going with the flow? You really do have to go with the flow of the game and just still stay really present into, okay, how can I get in a position to be able to react to the best of my ability? If Josh Hazlewood slightly misses, I'm going to be all over it. Still need to put the pressure back on the bowler to be able to have to execute exactly right. And just keep doing that over and over again. If there's some loose balls, you've got to capitalise on them. बहुत ही अच्छी गेंद करवाई है हजलवुड ने, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। A lot of loose balls there. He's so accurate. It's one of his huge strengths. Really setting the tone. It's bounce, that ball just coming into off stump, and the occasional one just holds its line away from the right-hander. This is a question a lot of the young boys ask me. If they're an aggressive opener, and a couple of wickets fall on the other end, and you're like 5 for 2 or 10 for 2. हजलीवुड एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं। Very aggressive opener as well. And when a couple of wickets fall, do you look at the situation and just tone it down a bit, or you just keep going with the shots that you know to play? Yeah, for me, it was trusting. For me, it was trusting what I could assess with the conditions.
if I knew that the wicket was playing true and I could feel I could hit through the line of the ball, then that's what I'd trust what I felt. No matter what the wicket situation was, I wanted to just be as well prepared as I possibly could. एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, एज होने से बच गए हैं. There's enough in this wicket. There's enough in this wicket to keep the Australians well in the game here. And Virat Kohli, he knows he has to put pressure on the bowling of Josh Hazlewood. One just takes a little bit out of the surface, so it just kicks through. Have you seen that big smile from Wado? Every time there's this ball doing so much for the fast bowlers. That massive beaming smile. It's like he's amazed that in Chennai so much is happening. And he's played for CSK and he's been so successful. हजलीवुड एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, और ये स्ट्रेट पे बाउंड्री लगा दी है. इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो. इस इनिंग्स की पहली बाउंड्री लग चुकी है. Virat's not just going to sit there and defend and hope to get through to विराट कोहली के 10th बल्ले से over while the ball stops swinging. He's going to put the pressure back on Josh स्ट्रेट पे Hazlewood. लगाया Come out है his चौका. crease a little bit, just to give himself a little bit more length. He's just so still, a little shuffle. It's so balanced to get his weight going straight through the line of the ball. Good work from Mitchell Starc. Pat Cummins was getting loose. Maybe he comes into the attack now. 6 overs gone, 18 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगी. आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स. कैडबरी डेयरी मिल्क. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. चाय चाहिए कौन सी जना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए. अपनी पहचान खुद बनानी है, अपने रास्ते खुद निकालने हैं. साफी, नया चेहरा, नई पहचान. एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग. चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो. Trying to exploit the variations in the surface from a good length, occasionally fuller, occasionally shorter. Yeah, absolutely. The only thing with Pat Cummins, he doesn't have as much energy behind the ball compared to Josh Hazlewood. So he's just got to continue to be really accurate with his length. Even though the right arm bowler is similar sort of height, when Pat Cummins is at his best, you do feel like the ball is hitting your bat really hard. And occasionally, when he's a little bit off, the ball can float a little bit when he gets a bit full, or sit up in the wicket a little bit, so it gives you a few more scoring options compared to Josh Hazlewood. Josh Hazlewood most of the time is just, it's always there, just energy behind the ball, hitting your splice of your bat so hard. One thing I need to say about this Indian batting lineup is that this team, they've got so many bases covered. KL is coming in at number 5. So if the situation of the game's set up, he can bat very nicely through the middle, play spin very nicely. But if they're in this situation like they are now, lost 3 early wickets, you've got a world-class opening batter, especially in ODI cricket, in short format cricket, to be able to come in and make the most of an opportunity to be able to bat in a power play as well. So India have got a lot of bases covered when you really do need it in a World Cup. It's a part of the game that we often talk when we're sitting in the Caribbean watching this man, the great man, his fitness levels, his ability to rotate strike, and willingness to do a lot of running and not just sit back waiting for boundary. Yeah, Virat, he is the complete player because he can certainly put pressure on the bowlers to hit boundaries, but one of his incredible skills is to be able to rotate the strike, and his fitness, you're absolutely right, Ian Bishop.
The Australians are up and about in the field as well, and they need to be. They need to be able to keep cutting down these balls to build the pressure. And Virat Kohli, whether it's ICC events, whether it's any high pressure situation, Virat Kohli, he knows how to bring the very best that he's got against the very best in the world. What a start. Great Sachin Tendulkar. What a player. Best I've bowled against, to be fair. He was in the commentary box the other day in our first game, and just so calm, still looking as fit as ever. Yeah, when you see that stat, over 2,000 runs in World Cups, it's hard to get your head around how that's possible. But as you said, he's just so calm. He still looks like he'd go out and play now. He's ready to, I'm sure he'd still do a great job. All of these guys batting here, standing on the shoulders of the giants that went before, including Sachin, 20 for 3. कुछ लम्हे सिखाते हैं सच्ची खरे की पहचान। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रहे हैं हम सेफ और हेल्दी का यकीन। KNNs। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, एक और कप चाय टपाल दानेदार। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पे पाक कार्ड। अपने बैंक से पे पाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पे पाक। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Hazelwood to continue. Has been an irrepressible spell so far. Terrific control. We feel now as though Virat Kohli's just starting to counter punch a fraction. He can't go too hard, just has to. यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई जा रही है। Unpredicted there, still got India in his favour. I wonder what a fourth wicket will do here though. दोस्तों बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई जा रही है टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। How long do you absorb pressure? The good thing in India's favour at the moment, KL Rahul's temperament at the crease. He's got the ability to soak up pressure with अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। Being an opening batsman by trade, KL Rahul, he knows these situations. We've seen him in the past be able to navigate through this in run chases. And then the class of Kohli, over 13,000 runs. He's done it all in this format of the game. Arguably the greatest ever player in this format. So he won't be overawed by anything. Australia keep coming though. Josh Hazelwood, like you said, Dirk, he's been outstanding so far. In the air, could it be a fourth? Oh, put down! Two players coming towards each other. Mitchell Marsh puts it down. How big a miss is this? Oh, that's massive. We're talking about Virat Kohli here. Simple catch, but lack of communication. Mitchell Marsh definitely see Alex Carey running towards him in the back of his eye and wasn't committed to the catch. Didn't even hit his hands, in fact. It tells you that all he was thinking about as he was running towards the ball is Alex Carey going to bump into me. He's not even getting hands to it. Well bowled. It got a little bit big on Virat Kohli. Yeah, just hurried him for pace off the surface. The new ball skidding. Mitch Marsh just overruns it slightly.
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी इसी बॉल पे बच गए हैं विराट Like कोहली DK आउट होने said, से। obviously put off slightly by Alex Carey. Charging towards it as well. How big will that miss be? I've been a keeper for most of my life, but I've also ended up fielding a lot thanks to keepers who found a way to keep. जी हाँ दोस्तों, And the अभी one thing that the पिछली fielding गेंद coach पे did tell me विराट when I was कोहली fielding आउट was, होने से बच गए हैं, in a कैच ground छोड़ where there's दिया है plenty of crowd, if there is a high ऑस्ट्रेलिया के catch and you're running बल्लेबाज for ने, it, ऑस्ट्रेलिया don't के just फील्डर call ने। for it because जी the हाँ other दोस्तों, fielder might not hear ऑस्ट्रेलिया it. के Use फील्डर your ने hands as कैच signals. छोड़ दिया है, Raise your जिसकी hand, वजह से make sure that you're waving enough to say विराट that it is कोहली your बच catch. गए हैं। That gives you the confirmation that you're going for it, and the fact that the person who's running for the catch as well is aware that you're going to be taking it. Just the one off the over. The chance goes begging. 21 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगे। आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Almost squeezing through. And let's have a look at another magic moment, this time 2003 World Cup final between these two great nations. That's in the air, should be taken. The World Cup for Australia. A comprehensive win here by 125 runs. The Australian team, the champions of the 2003 World Cup. Wait. Quite misfield. दोस्तों, I just wonder, Aaron, you see this ball ऑस्ट्रेलिया nipping की टीम around से it. जैसे उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने break अब से ही तीन बल्लेबाजों को आउट कर दिया है। यहाँ दोस्तों 20 के स्कोर पे 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। Wasn't a difficult chance. ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। Yeah, and you always say, can the man with the gloves get there safest out of everyone? Very similar to Virat Kohli's dismissal in the 2015 semi-final. Remember in the semi-final, Mitchell Johnson hurried Virat with a quick bouncer, splice of the bat and went on. See, India are just starting to get a little bit of momentum in this innings. It just feels around the ground like the crowd's starting to get involved a little bit more. Maybe the wicket's just settling down slightly as these lights are fully taken over. Australia need to break this partnership. And that's the perfect follow-up to what we saw in the previous over. And just touching on that to show highlight how difficult it is for the openers here. The Indian opening bowlers were getting 0.6 degrees of swing. The Australian openers 1.7, 3 times the amount.
टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ज्यादा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, उससे ज्यादा बेहतर कर रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। अपनी फील्डिंग में भी काफी बेहतरी कर रही है। Single in the over. 26 for 3. चाय चाहिए कौन सी जगह, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स LED TV अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगे। बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज हो, चूज पेपाक। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। We're going to see spin introduced for the first time. He's got a huge role to play, not just in this contest, but across the World Cup. Averaging 28 and a half with the ball in the last 3 years. He's become more than just a part-timer. He's not that anymore. Shelve that idea. Yeah, with Maxwell into the attack, you can see the 2 men out patrolling the boundary, deep mid-wicket and deep backward square. Traditionally, you'd like Virat to be playing the sweep shot. But on a surface like this that is just holding a little bit more, with mid on inside the circle, can actually be a harder shot to hit down the ground on a surface like this. With Maxwell being over the wicket, he's looking to force Virat to hit through the offside. And with that man, David Warner, at deep mid-wicket, it's almost there as an insurance policy. So if he does come down the track and look to target mid-on, that's often where a miss-hit will go. One thing that we will see the Indian batters do is not take on the spinner at this point of time. You're not going to go for the big shot. You can understand the lengths that Maxwell is going to bowl, because the field is set is going to be a lot shorter than what he would like to be. He wouldn't want to bowl full because he has mid-on and mid-off pump. And interestingly, I'm pretty confident to say that the Indian batters wouldn't do anything to go over the top right now. Yeah, would you say that that's more of a defensive mindset from Glenn Maxwell, or do you think inside this power play it's just looking to build something? I think because of the fact that they don't have anybody to bowl the power play, when Ashton Agar was there, then you would have seen him bowl. But because they have just Pat Cummins bowling the 2 from that side and Mitchell Starc in hot conditions, they wouldn't want to bowl Hazelwood more than 4. They just want to finish the power play. And they finish it strong. After 10, it is 27 for 3. या दोस्तों 10 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। 27 स्कोर है टीम इंडिया का। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई दी है हमें टीम ऑस्ट्रेलिया की। फिक्र से बेफिक्र। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई दी रही है हमें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में। 10 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। 27 स्कोर मिला है 10 ओवर्स में टीम इंडिया को 3 विकेटों के नुकसान पर। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Wickets in the third 10 overs. It's an onslaught early on. With wickets to some batting minds that, let's say, went astray. या कुमिंस आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। Playing a long way away from his body. या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कुमिंस आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए। सामना करेंगे विराट कोहली। He got an absolute beauty from Josh Hazelwood. And again, Virat Kohli just
तुम्हें दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को. From the first ball that he faced, which was a lead from Mitchell Starc, good aggressive footwork. You can generally tell in Virat's first couple of balls what mindset he's in. All the carnage going on around him, he knows that he won't panic in a situation like ऑस्ट्रेलिया की this. तरफ से. I'm hoping last time I said something like that had created a chance, but such a wonderful player. तुमिन दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, Quickly does that mindset ऑफ स्टंप के बाहर change की as a ये batsman? You गेंद, look at the scoreboard, you see हल्का the सा pressure. पुश किया इस Some गेंद wickets को falling around लेफ्ट you. साइड की जानब, और एक रन को दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है. While you're out there as a batsman. Oh, I think you have your own game plan and you assess the conditions as quick as you can, and a lot of that assessment would have been done while he's in the field, talking to his wicketkeeper KL बहुत Rahul, अच्छी कारकर्दगी getting दिखाई information दे about रही the है आज wicket, हमें इस मैच में दोनों ही what it टीमों feels की. like from a keeper's point of view, and just passing that information on, and it's just about sticking to your game plan, and I don't think he's the kind of guy that lets that worry him. दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, Another example. रन लेने का कोई मौका नहीं दिया फील्डर को. फील्डर ने रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को. First ball, and that's a beauty. Just clipping the top of the stumps, and then 3 down. 3 down, 2 runs on the board. And Kohli started to get moving, and he created this chance. Mitch Marsh not able to hold on to it. कमीज एक बार फिर दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, उठा दिया हवा में, बहुत ही शानदार शॉट लगाया है ऑफ साइड की जानिब, चौका लगा दिया है ऑफ साइड की जानिब. दोस्तों ऑफ साइड की जानिब पे राहुल ने चौका लगा दिया है. फील्डर के ऊपर से गई है ये गेंद, 4 रन के लिए. Fielder of Glenn Maxwell can't get there. Tight gap to Pearce. Oh, he's got it through. As a bowler, that seems unfair. You should have to at least swing for the ball when you're hitting a four. Hang on, Duke. दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को. Every dog has his day. या दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले मैचेस में आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाएगी. This game if they bowl India out. The wicket column, that's the problem for India. They have a guy that's so tough like Kohli. He has that grip between his teeth. He's got something in his eyes where he says, you know what, I'm going to do the job. You know how good he is in a run chase, averages 64.3. 26 hundreds, and I think they'd take a Kohli 100 here today, India. Yeah, they certainly will. As we see the slip come out into a mid-wicket, Australia looking कमीज एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा गेंद, लेग साइड की जानिब पुश किया इस गेंद को, और 1 रन को आसानी से पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने. 33 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगे. आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स. कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, 11 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा. जी हाँ दोस्तों, 11 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा. का मैदान, स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 33 है, फास्ट 3 विकेटों के नुकसान पर. जी हाँ दोस्तों, स्कोर 33 है, 3 विकेटों के नुकसान पर टीम इंडिया का. चाहिए कौन सी जना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए. जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता आज मेरा बहुत ही बेटा अच्छी कारकर्दगी दिखाई दे रही है दोनों ही डेबिट टीमों के कार्ड दरमियान. नाम लेकर तलब कांटा करें. का चूज हो, मुकाबला चल चूज रहा पे है, बात. शायद टीम की धड़कनें चाय तेज हो रही हैं. और क्रिकेट जैसे वाइटल आप पियो कौन सी टीम जिंदगी जीत जी. पाएगी. Marnus, generally speaking, if he's going to have a bowl, you probably see him bowling in the middle halfway through the game. He didn't do that today. best went fresh. मैक्सवेल आए हैं. जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए.
टीम Going with a three. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। Aggressive captaincy. Same leg side field. The only change when the power play is that one of the men inside the ring on the offside, deep pointers push back to the boundary, giving Glenn Maxwell फील्डिंग सेट की जा रही है, bit of relief. दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा गेंद, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। So Cow's quite straight. Just to be able to protect the ball that is going to spin into the bat and go square. Just hope that one might just piss off the wicket a wee bit and actually get a catch a little bit square in there. एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा गेंद, फील्डर मौजूद, एक बार फिर रन देने का कोई मौका नहीं दिया। As a captain, your fielders in this situation, who are you manipulating? When are you thinking that you're going to put your drives back versus keep them up? Well, just as you say that, Glenn Maxwell has pushed mid-on back, and Steve Smith has come from that square position into a traditional mid-wicket. 3 men out on the leg side. 11 ओवर और 2 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। मैक्सवेल एक बार फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही मुश्किल से बचे हैं क्या राहुल, बहुत ही मुश्किल से बचे हैं, विकेट गंवाने से बहुत मुश्किल से बचे हैं। Indian batsmen are great at is manipulating the ball against spin, particularly to that square leg. See KL giving himself a touch of room to try and beat that short third. Certainly taking their time at the moment, taking their time to settle in into these balls and get a little bit older. You saw during the day that into the other areas of the square, it scuts the ball up more than what it would be just when a bowler bowls it. And just the 2 off, crawling along, 35 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगे। आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 11 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा, 12 ओवर्स का, बल्कि 12 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। 35 रन हैं टीम इंडिया के 3 विकेटों के नुकसान पर। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलेंस LED TV अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल। It's a gentle loosener. Green into the attack. 5th bowler used. Just 40. The ball in his ODI career. Oh, how the Australians would love that to come down a couple of notches today. Yeah, I think the more confident Cameron Green gets in his body, the more one-day cricket he plays. Remember how young he still is. He's so inexperienced. He'll continue to improve each and every game he plays. That ability there for KL Rahul to knock a good length ball into the offside. The crowd's been in today. It's lovely to see a full Chipok Stadium. Halfway mark with the target of 200. India and the fans in the proper hoop, they were thinking surely this is going to be their night. 3 wickets. The Australians back in the contest, firmly in the contest. Really delicately played.
Had that on the ground. Hazelwood's just tucked off. Josh Inglis also on the ground for Adam Zampa. Often will go off and get some treatment right before he comes onto bowl to loosen that shoulder and neck up that he's had a few issues with over the last couple of years. Green just can't afford to be too short here on a surface that got some inconsistencies. Such a good point. Looking at the Indian bowling, 63% of their balls are actually on the wicket. Strike rate just under 60 as well, so need to bring the stumps into play. 2 modes of dismissals, bowled and LBW, so if they can bring those stumps into play, adjust the pace, mix it up with those bounces, and it means that you're trying to force the batters to actually do something. The drives are up as well, not easy to hit down the ground. It's gone nowhere. That ball has lost the air. Has not bounced at all. Is it going to continue breaking up and playing more tricks as the night goes on? You know what I hate as a batter? If that ball is at the stumps and it goes straight through and knocks you over, and then the opposition never does it. Always bounces nicely, only does it off the wickets. You know it's not your day. It's just not your day. And the opposite. This one leaps off. Almost taking an edge. 38 for 3. या दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर मैच में आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाए। या दोस्तों बिल्कुल आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले मैचेस में नए मैचेस में आपको मेरे लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो। Saying there he didn't hear anything. There's some interest from inside the circle, square of the wicket. No, more hopeful than anything from Warner and Smith. Have a look at this ball, the state of this ball. Only 6 overs old. One side on the left there, one side is still shining, the other side is just stuck. You see that tan colour. Well fielded, Steve Smith. Just when we're talking about trigger movements, why is it the batsman, every batsman seems to have something that they do before the ball's released? It's for the pace bowlers, it's mainly around being able to get some energy in your legs, energy in your body, so that you can get across, your feet are moving already while the ball's going, but getting nice and still in position. For some players it was around opening up that front leg so that their front pad wasn't an issue. But for others it was just getting still. My trigger movement was across my crease, which is not ideal. And for me personally, it was the foot angle. My foot would often close off, which then didn't give me a huge amount of access to the ball, particularly one that moved back. Foot angle being the direction that your front foot is playing. Yeah, my front foot would often be pointing towards cover, whereas ideally, at worst, we wanted to mid-off. Virat Kohli's amazing at being able to open up that front foot. मॉडल्स कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है,
तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। हर एक बोतल में है बड़ी बरकत, ताजगी की बरकत, राहतों की बरकत, जो आपकी हर महफिल बनाए बाबरकत। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। You've got a real match on now. This for me is the key, Cameron Green, from Australia's point of view. His bowling form will be watched. There's no Stoinis today. There will be competition for a place between him and Stoinis. Whether you feel the same, but DK, did you distract him? There are two keepers in here, generally supportive of keepers. You could see, as soon as Marsh dropped the catch, he just looked at Carey and said, no, you're just coming right at me. And that, they say a picture tells you 1,000 words, and you can see why that happened. And the general taps to keep a nice peaceful one. Yes, I think good job he did that, because you've got to believe that that's gone now. Forget that. Focus on what's ahead. Still a long way to go in this game for both sides. And that applies to Virat Kohli as well. Forget that. Start building this partnership. 10 runs at a time, 15 runs at a time. Don't think about the end score. You know, break that target into small size bits and then take it from there. Lovely shot, just a flick of the wrist. The timing is good, placement good. Quality shot before. We haven't seen many boundaries from India so far in this innings, but when it comes, it looks real good. This one from Virat Kohli. We've been following him, and I'm sure plenty have. This is a shot that we'd be very, very used to watching. The flick and the flick of the wrist to go with that. And again, result the same. One to the right of mid-wicket. This one, the earlier one to the left. Two brilliant shots to end the over, 49 for 3. oh, just an action replay. Beautiful position into the ball. Virat Kohli just gave himself space with that, put that slid back nicely. Time for a drink. This drink break is brought to you by Vital Tea, Vital Pure, Zindagi Jiyo. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विराट कोहली ने आखिरी 2 गेंदों में 2 चौके लगातार लगाए हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग जा रही है इंडिया की तरफ से। आज हमें बहुत ही अच्छा मैच घंटे का मुकाबला देखने को मिल गया है। अगर आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे लाइव आने वाली लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकेंगे। आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकेंगे। बिल्कुल नए आने वाले मैचेस में आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं अगर आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरे चैनल में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। चूज होप, चूज पेपाक। फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान, परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान। फास्ट, तारों से सितारों तक। The all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips, so crispy, so tender. एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है
एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। जज्बात में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ सहारा फैमिली प्लान। स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलेंस LED टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश। फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश। लेट योर फेस ग्लो। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इनवरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। हर एक बोतल में है बड़ी बरकत, ताजगी की बरकत, राहतों की बरकत, जो आपकी हर महफिल बनाए बाबरकत। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। चाय चाहिए कौन सी चला, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। अपनों की दहलीज पे रहे, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहे पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। KNN। Chasing that 200, they need to win. Still 151 needed. You know, this stage, Australia was 71-1. This shows how quickly the game can turn on its head. As I'm watching this game, it's precariously poised. The one thing I would like to ask Cummins is, why is he holding back Zampa? Zampa is someone who has a good matchup against Virat Kohli and KL Rahul. He's yet to bring him on to the attack. I just get the feeling that the only thing I can think is they want to get him in a position where India is looking to get after him a bit as well. That's when Zampa is good. The other thing is get as many of Maxwell out of the way, or at least 4 or 5. Split those 4 or 5 between him and Green. Try and get that out, and then for the final, say 120 runs, 130 runs, get your main bowlers and try and see what can happen with the game. Nice placement, should get 2. So when you look at the bowlers, Green's bowled 2, but you would expect that Maxwell, Cummins, Hazelwood, Stark as the 50 comes up, and Zampa probably bowls the majority of their overs. So when you look at this 35, just under 35 overs to go, Zampa bowls 10 at one end and someone bowls 10 at the other, you're getting to that 37, 38 overs. So you have to work out how far do you want to keep him, and then how many overs is he going to bowl, because you probably don't want him bowling in the back 10. Unless it's to the tail order. Opportunity could be the very next over, Katie, with Cameron Green going for a couple of boundaries. These two came together when the score was 2 for 3. They've added 49. And the 50-run partnership. They've done it well. Taken their time. There's been a sense of calmness. Apart from that drop catch, they haven't done anything wrong. They've accumulated the runs. At the end of 16, it's 52 for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलेंस LED टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है।
एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Cameron Green in his previous went for a couple of boundaries, and to Virat's strength as well, the flick shot which has served him really well throughout his career. Pat Cummins looks at that and goes, no, I think you're done for the moment, and he brings back Mitchell Starc. Yes, I think you're right. I don't see Green needed really, unless a couple of wickets goes and he feels that he'll need some short stuff to be bowled. Otherwise, Maxwell can do the job. Yes, Starc from over the wicket. Now that the ball is 8 overs old, because as we know, we use 2 different new balls for 2 different ends, so just the 8 overs old ball. It's amazing how the ball reduces in terms of swing. And to play Mitchell Starc when the ball is swinging and then the ball swings less is completely different. And it gets softer. And you see with this abrasive surface, the color of the ball also starts changing.